A warm greeting to one and all, and welcome to session The Importance of Progress Reports and Viva in Our Research. So in the today's sessions, we are going to discuss about what is Progress Report, then its purpose, then the functions and the contents of a Progress Report, then a format of Progress Report that one need to follow, a Progress Report Viva and why it is important, then on the date of Progress Report Viva, what you need to remember, and finally we will conclude our session. So what is Progress Report? So a report of work that has been carried out during a specified time period is known as what? A Progress Report. It means there is a certain specific time, and during that period of time what kind of work you have achieved, that is what you are going to specify in your Progress Report. Okay, now question arises, what is PhD Progress Report? It is a document that explains in detail how much work you have completed compared to your work. It means you might have planned certain time period in order to complete your PhD work. So out of that entire work, how much portion you have completed up till now, that is what you are going to specify in your Progress Report. मतलब पूरे ओवरऑल PhD वर्क के कंपेयर में अभी तक आपने कितना काम किया है वो हमको क्या करना है, प्रोग्रेस रिपोर्ट में स्पेसिफाई करना है. So in short, it outlines the activities like what you have carried out, what kind of work you have done, the task that you have completed, and the milestone you have reached against your entire project plan. मतलब हमने अभी तक क्या काम किया है, कौन कौन से काम हमारे ख़त्म हुए हैं, और लास्ट में हम ये बता रहे हैं कि हमारा जो ओवरऑल प्लान जो हमने पहले स्टार्टिंग में बताया था सिनॉप्सिस में, तो उसके हम कितने करीब पहुंचे हैं. ओके, सो दैट इज व्हाट यू आर गोइंग टू स्पेसिफाई इन योर प्रोग्रेस रिपोर्ट. नाउ क्वेश्चन अराइज, इज इट नेसेसरी टू सबमिट द प्रोग्रेस रिपोर्ट? यस, एज पर द यूजीसी गाइडलाइन वन मस्ट सबमिट इट आफ्टर एवरी 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन टिल द सबमिशन ऑफ थीसिस. इसका मतलब यह है कि आपको हर 6 महीने बाद क्या करना है, आपको प्रोग्रेस रिपोर्ट सबमिट करना है. कब तक? जब तक आप अपनी कंप्लीट थीसिस यूनिवर्सिटी में सबमिट नहीं करते तब तक आपको हर 6 महीने में क्या करना है, आपको प्रोग्रेस रिपोर्ट सबमिट करना है. प्रोग्रेस रिपोर्ट इज वन ऑफ द मैंडेटरी रिक्वायरमेंट फॉर ऑल रिसर्च स्कॉलर टू सबमिट टू द यूनिवर्सिटी विद द कंसेंट ऑफ व्हाट, अ गाइड एंड थ्रू अ प्लेस ऑफ रिसर्च वर्क. इट मीन्स आप डायरेक्टली यूनिवर्सिटी में प्रोग्रेस रिपोर्ट सबमिट नहीं कर सकते. आपको जो भी प्रोग्रेस रिपोर्ट सबमिट करना है वो थ्रू आपके प्लेस ऑफ रिसर्च वर्क के थ्रू ही आपको क्या करना है, सबमिट करना है, बाय टेकिंग द सिग्नेचर ऑफ व्हाट योर गाइड एंड ऑल द मेंबर्स ऑफ द प्लेस ऑफ रिसर्च वर्क. एंड फाइनली वन ऑल्सो नीड टू गिव व्हाट, द प्रेजेंटेशन of the work carried out during this period before RAC, called as Research Advisory Committee, and the expert members of the subject. तो खाली प्रोग्रेस रिपोर्ट सबमिट करने से ही नहीं होगा, आपको क्या करना है, उसका प्रेजेंटेशन देना है. किसके सामने में? रिसर्च एडवाइजरी कमेटी. सी द वर्ड इटसेल्फ सेइंग इट्स व्हाट, रिसर्च एडवाइजरी. मतलब वो आपको एडवाइस करेगी कि ओवरऑल आप जो काम कर रहे हैं वो प्रॉपर डायरेक्शन में हो रहा है, नहीं हो रहा है. उसमें जो भी सजेशंस उनको देना है वो आपको दे सकते हैं. इट मीन रिमेंबर दिस RAC committee basically is going to help you in order to carry out your work in a proper direction. That is the basic role of what, the RAC committee. Okay, then what is the basic purpose of progress report? The purpose of progress report is that to know the progress against a milestone usually specified in the synopsis. We have already seen. मतलब इसका basic purpose क्या है कि आपने अभी तक कितना काम किया है जो आपने ऑलरेडी सिनॉप्सिस में बताया है उसके कंपेयर में. ओके, एंड द सिग्निफिकेंस इम्प्लीकेशंस ऑफ द रिसर्च टिल डेट. मतलब अभी तक ओवरऑल आपका जो भी काम अभी तक हुआ है उसका ओवरऑल इम्पैक्ट क्या है. एंड द सिग्निफिकेंस एंड इम्प्लीकेशंस ऑफ द रिसर्च टिल डेट. मतलब ओवरऑल आपका ओवरऑल इम्प्रूवमेंट कैसा है, और आप जो जो लिमिटेशंस अगर आपके इसमें आ रहे होंगे तो वो भी सब हम क्या करते हैं, जनरली प्रोग्रेस रिपोर्ट में हम सबमिट करते हैं, वो हम RAC कमेटी के साथ डिस्कस कर सकते हैं. देन ईच प्रोग्रेस रिपोर्ट गिव्स व्हाट, द इनसाइट ऑफ करंट वर्क कैरिड आउट ड्यूरिंग द 6 months. तो हर प्रोग्रेस रिपोर्ट में हम क्या मेंशन करते हैं कि हमने 6 महीने में क्या क्या काम किया है, एंड टू आइडेंटिफाई अ प्लान ऑफ एक्शन फॉर द नेक्स्ट फेज ऑफ वर्क. तो एक बार वंस यू हैव कंप्लीटेड द काइंड ऑफ वर्क ड्यूरिंग द फर्स्ट 6 months, okay, so it will give a direction, the kind of work you are supposed to do during the next 6 months. It means each progress it will give what? It will give an insight, the kind of work you have completed and the kind of work you are supposed to do during the next 6 months. So that is what the basic purpose of what? A progress report.
So it is always suggest to you to submit your progress report on a time, and not only that, prepare the entire report on that. So we will discuss about that within the next few slides. Now what are the functions and the contents of progress report? तो generally progress report में रहता क्या है? It is in the progress report you explain any or all the following points. So how much work you have completed, what part of work is currently in progress, अभी कौन सा काम चालू है, what work remain to be done, अभी और क्या क्या काम आपको करना है, what problem or unexpected thing if any have been arise, अगर आपको कुछ प्रॉब्लम्स आए होंगे, कुछ डिफ़िकल्टीज आई तो किस तरह की डिफ़िकल्टीज आई है वो भी आप इसमें मेंशन कर सकते हो, एंड हाउ द प्रोजेक्ट इज गोइंग इन जनरल, ओवरऑल आपका वर्क किस तरह से चालू है, ये सब चीज़ें हम क्या करते हैं जनरली प्रोग्रेस रिपोर्ट में मेंशन करते हैं. नाउ व्हाट इज द काइंड ऑफ फॉर्मेट, नाउ वी विल डिस्कस द फॉर्मेट ऑफ प्रोग्रेस रिपोर्ट. So most of the universities have their own format. Okay, it means जहाँ पे भी आप रिसर्च कर रहे होंगे हर एक यूनिवर्सिटी का एक अपना फॉर्मेट है, हर एक प्लेस ऑफ रिसर्च वर्क का अपना एक फॉर्मेट रहता है जहाँ पे आप क्या मेंशन करते हो, प्रोग्रेस रिपोर्ट के बारे में डिटेल मेंशन करते हो. इन द अब्सेंस ऑफ इट, अगर इस तरह का कोई प्रोग्रेस रिपोर्ट अगर आपकी यूनिवर्सिटी में नहीं होगा, सो वन कैन फॉलो द फॉलोइंग गाइडलाइन फॉर सबमिटिंग इट. ओके, इन द अब्सेंस ऑफ दैट ऑल्सो, अगर आपके यहाँ पे प्रोग्रेस रिपोर्ट अगर होगा तो भी मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि ये जो नीचे मैं आपको गाइडलाइन दे रहा हूँ उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करो. द फर्स्ट वन इज व्हाट, द लेंथ. द प्रोग्रेस रिपोर्ट शुड नॉट एक्सीड 12 टाइप्ड पेजेस, मतलब 12 पेजेस से ज़्यादा नहीं रहना चाहिए, और इसमें आपके फिगर, टेबल्स और रेफरेंसेस नहीं रहना चाहिए इन 12 पेजेस में, इन डबल स्पेसिंग एंड इट नॉट बी बाउंड, आपको कोई बाइंडिंग नहीं करना है. ओके, देन कंटेंट्स, इसमें क्या क्या रहना चाहिए. द टाइटल ऑफ पेज ऑफ द रिपोर्ट शुड इंक्लूड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इन एडिशन ऑफ व्हाट, द टाइटल ऑफ वर्क. अपार्ट फ्रॉम योर टाइटल ऑफ वर्क, द फॉलोइंग थिंग शुड बी देयर इन योर कंटेंट्स. व्हाट आर दोज? द नेम ऑफ रिसर्चर, द नेम ऑफ सुपरवाइजर, the date of PhD registration and the registration number, then the place of work where you are performing your research work, and finally you are going to mention the affiliated university where you are performing what, your research work. Okay, and finally you may mention the date of your previous progress report. If it is your first, in that case you don't need to mention it. Okay, in that case you can put what, a dash. Then the report should begin, okay, with the brief introduction which should include, तो उस ओवरऑल रिपोर्ट में क्या क्या रहना चाहिए. द जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ द प्रॉब्लम, द मेजर एम ऑफ द रिसर्च, then the point wise summary of the work done till date and mention how you are reaching towards your goal that has been mentioned in the synopsis. मतलब ओवरऑल आपको रिपोर्ट में क्या बताना है कि आपका बेसिक प्रॉब्लम क्या है, मतलब आपका टाइटल ऑफ वर्क को आपको वहाँ पे थोड़ा मेंशन करके आपको ओवरऑल बताना है आपका ओवरऑल एम क्या है, वो अचीव करने के लिए अभी तक आपने क्या क्या काम किया है, वो क्या करेंगे, वो आप उसको पॉइंट वाइज 1 by 1 उसमें मेंशन करेंगे. ओके, द रिपोर्ट शुड एंड विद अ कंक्लूजन सेक्शन. लास्ट में आपको क्या करना है, कंक्लूड करना है आपके रिपोर्ट को भी. तो मेजर कंक्लूजन ऑफ द वर्क डिस्क्राइब इन द रिपोर्ट, मतलब मेजर कंट्रीब्यूशन आपने क्या क्या अचीव किया है उस 6 महीने में. द एक्सटेंट to which the aim set out in the proposed plan of work for the previous 6 months that have been fulfilled. आपने जो डिसाइड किए थे कि 6 महीने में मुझे ये काम करना है वो कंप्लीट हुआ है या नहीं. द प्रपोज प्लान ऑफ वर्क फॉर द नेक्स्ट 6 मंथ, और आपको एक प्रपोज प्लान बताना है, बेसिक आउटलाइन बताना है कि आप अगले 6 महीने में क्या करने वाले हो. एंड फाइनली एट द एंड प्रोग्रेस रिपोर्ट के लास्ट में आपको क्या करना है, एनेक्सर लगाना है. उस एनेक्सर में आप क्या क्या मेंशन कर सकते हो, आपने जो भी पेपर पब्लिश किए होंगे उस पीरियड में, आपने जो भी रिव्यू ऑफ लिटरेचर पढ़े होंगे उसकी एक लिस्ट देनी है. आपने कौन कौन से पढ़े, मतलब कौन कौन से बुक्स या कौन कौन से पेपर्स आपने पढ़े होंगे उसकी एक सिंपल लिस्ट देनी है. देन आपने कोई कॉन्फ्रेंस, सेमिनार, वेबिनार या फिर कोई कोर्स वर्क अटेंड किया होगा तो उसके बारे में भी आपको क्या करना है, एक डिस्क्रिप्शन देना है कि आपने कहाँ कहाँ कॉन्फ्रेंस अटेंड किए या फिर कोई वेबिनार या सेमिनार अटेंड किए होंगे तो उसके बारे में एक सिंपल डिटेल्स आपको देना है इन द फॉर्म ऑफ टेबल ओनली. ओके, सो दिस इज व्हाट ऑल अबाउट द प्रोग्रेस रिपोर्ट में आपको क्या क्या मेंशन करना रहता है. नाउ जनरली दिस इज व्हाट अ सैम्पल फॉर्मेट. देखिए यहाँ पे क्या रहता है कि ये जो प्रोग्रेस रिपोर्ट सबमिट कर रहे हैं वो कौन से पीरियड का है. देन जो मैंने ऑलरेडी बताया आपको कि नेम ऑफ रिसर्च स्कॉलर, डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, देन ये प्रोग्रेस रिपोर्ट आपका पहला है, सेकंड है, थर्ड है, ठीक है, वो मेंशन करना है. देन प्लेस ऑफ रिसर्च वर्क, देन टाइटल ऑफ योर रिसर्च वर्क. एंड यहाँ पे खाली आपके पास क्या है, खाली 4 या 5 ही लाइन दी है कि आपको ये बताना है कि आपने ओवरऑल वर्क क्या किया है. तो लेकिन ये बेसिक क्या है, समरी है.
तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे एक लिस्ट अटैच करके लिख के आप पूरा डिटेल में आप बता सकते हो कि आपने ओवरऑल वर्क क्या किया है। तो मेरी सजेशन यही रहेगी कि आप वो पूरा डिटेल में मेंशन करो, ताकि जब आप फाइनल पीएचडी थीसिस लिखते रहोगे तो उस समय ये जो भी आपने अभी लिखा हुआ है दैट विल हेल्प यू अ लॉट ड्यूरिंग राइटिंग योर रिसर्च थीसिस। So again, remember, instead of writing only few lines over here, okay, I will always suggest you to write some 10 to 12 pages in detail and mention the kind of work you have done, the kind of review of literature you have referred, and overall work that you have carried out during that period of that progress report. So it will help you a lot when you are writing your entire thesis. Okay, then you need to take a sign of your guide. Okay, apart from this, the place of research work may give you some additional pages, okay, where you need to mention certain things, and one required to take the additional signature of the RAC committee member, that is the research advisory committee members, along with the experts. Okay, then a progress report viva. What is this progress report viva? Here you are supposed to give us presentation of your entire work that you have performed during the 6 months. Okay, so this presentation must include the following point: the topic title, the research scholar and guide name, the date of registration, the place of research work, then content of overall presentation. Okay, it means table of contents of your overall presentation, which should include the title of work, then aim, the basic description of your overall research, मतलब आपका ओवरऑल रिसर्च में आप क्या करने वाले हो वो बताने वाले हो, एंड यहाँ पे लास्ट में आप क्या बताएंगे कि आउट ऑफ दैट व्हाट काइंड ऑफ वर्क यू हैव डन टिल नाउ, मतलब ओवरऑल वर्क आप यहाँ पे मेंशन कर रहे हो, उसमें से कौन सा पार्ट आपने 6 महीने में कंप्लीट किया है वो यहाँ पे आप बताएंगे. ओके, एंड व्हाट इज योर proposed plan for the next 6 months, that also you are going to mention. Then reference list used during these 6 months, and finally you are going to mention about what you are going to add the annexer. So you are going to mention all this annexer in the form of table only. So you are going to specify the title of your research paper, then publisher who has published this particular paper, then the date of publication, etc. Okay, and in the review of literature paper, what you need to mention, simply the kind of paper that you have refer or the books that you are refer. So you are going to simply mention what the heading of those, and at the end the conference, seminar or webinar that you have attended to related to your topics or your subjects. Okay, that is going to help you in your research. Only those conference, seminar and webinar list only you are going to mention. Next, on the date of progress report presentation viva. Okay, so what you need to remember, keep ready with your PowerPoint presentation of your work. Keep a soft copy of a pen drive as a backup. So if there is certain issues with your PowerPoint file, you can use this file. Okay, nothing else. Then keep the following copies in hard copies: registration letter, the copy of synopsis, and the copies of your progress report, including the previous one if any. Okay, if it is your first presentation, in that case you don't require this, but if you are doing your second presentation, in that case it is mandatory. So these are the things that you need to carry on the date of your presentation. Now overall conclusion: submit your progress report to inform a supervisor, a place of research work, and to university about the progress you have made on a project over a period of 6 months, the kind of work that you have done during the last 6 months. And like earlier said, during writing a thesis, it will help a lot. If you are preparing some 10 to 12 pages of the work that you have carried out during the 6 months, if you are maintaining that, so at the end, that is after the period of 3 years, you are going to submit how many progress report? Minimum 6. Okay, 6 multiplied by approximately 10 pages. It means you will have at least 60 pages ready with you when you are going to write your entire thesis. So take it seriously and perform all the things that I have been explained in this particular session. So with that, thank you very much. Have a nice day.